कल हमने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से करेंगे एंड थोड़ा सा विल सी द रिकैप कि कल हमने क्या क्या सीखा था एंड देन विल गो फ्रॉम देयर. ओके, सो लेट्स विल गो बैक टू दिस अगेन. ठीक है, सो कल हमने ऑलमोस्ट वी लर्न कि एक पूरा गेम डिज़ाइन का वर्क फ्लो कैसा होता है, थिंक प्रोसेस क्या होता है, स्टाइलाइजेशन क्या होता है, गेम टाइप्स क्या होते हैं एंड ऑल दोस थिंग. ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग क्या है एंड देन हाउ यू मेक जनरली द गेम प्ले. एंड आज का जो सेशन था इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डू प्लानिंग. इट्स लाइक अ ग्रे बॉक्सिंग बिफोर एज अ प्ले टेस्टिंग कि फाइनल पूरा विजुअल बनाने से पहले विल डू समथिंग वी कॉल ग्रे बॉक्सिंग. तो उसमें क्या होता है कि जनरली आप क्या करते हो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका डिज़ाइन एंड उसको जितना हो सके लोएस्ट वर्जन में जितना जल्दी हो सके यू कैन ब्लॉक इट आउट, मतलब ब्लॉक करना है. एंड देन वी सी द प्ले थ्रू कि वो दिखता कैसे है, ओवरऑल साइज क्या है एंड आपका स्केल क्या है, या फिर जिस किसी भी इन्वायरमेंट में बना रहे हो, राइट. सो उससे क्या होता है, द मोस्ट common thing in this, and before going to create anything like a final decision कि हम suppose मैं इस रूम का ही इंटीरियर ले लेता हूँ. सपोज मुझे ये पूरा एक रूम ब्लॉक आउट करना है एंड एवरीथिंग वी हैव टू मेक इट, सो विल क्रिएट अ रफली वेरी जितना जल्दी हो सके लो पॉली वर्कआउट एंड जितना मॉडल उसको हम बना सकते हैं विल डू दैट. सो उससे क्या होगा, यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द स्केल कि वो इन्वायरमेंट दिखता कैसे है. एंड वंस यू डू द फाइनल स्टेजिंग एंड एवरीथिंग एंड देन फिर आप डिसाइड करोगे कि ओके नाउ विल गो फॉर द फाइनल मॉडल्स एंड एवरीथिंग. फिर वो डिटेल मॉडल बनाओगे वंस योर ब्लॉक आउट इज अप्रूव्ड. ठीक है, हम तब तक फाइनल मॉडल नहीं बनाएंगे जब तक हमारे पास ब्लॉक आउट इट्स लाइक अ इटरेशंस फाइनल नहीं है. क्योंकि एक बार आपने अगर काफ़ी फाइनल मॉडल बना लिया तो उसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है. ब्लॉकआउट को यू कैन डू इट ईजिली, यू कैन चेंज इट आउट. आई विल शो यू, मैं दिखाता हूँ करना कैसे है. एंड दैट विल बी मच फास्टर rather than go for your final version model and everything. ठीक है, सो लेबल डिज़ाइन एंड एज अ लाइक अ ग्रे बॉक्सिंग ये सेम चीज़ है बट ऑलमोस्ट लाइक अ ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है. अगर सपोज कि इफ़ यू आर वर्किंग ग्रे बॉक्सिंग प्लस लेबल डिज़ाइनिंग and plus आप lighting artist भी हो, so you can see the 80% of your output in there with lighting and everything. and सिर्फ आप grey boxing ही कर रहे हो and then you will pass on to that model किसी आपके texturing team को या फिर आपके modeling team को who can do all those final version of that and they will final everything. So अगर आप ही वो कर रहे हो सब कुछ तो you should understand कि वो दिखता कैसे है, द फाइनल वर्जन ऑफ लाइटिंग एंड एवरीथिंग. सो पॉलिश करने में काफ़ी टाइम लगता है. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू दिस. ओके, वेलकम गाइस ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग. सो लेट्स जंप इन द प्रोजेक्ट. एंड इसके लिए मैं जनरली अनरियल इंजन यूज़ कर रहा हूँ. आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो. मैं अनरियल इंजन क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है. I'll tell you about that जैसे जैसे मैं उस पर ब्लॉकआउट करूँगा. सो यू विल गेट द आइडिया. एंड ब्लॉकआउट से पहले विल सी सम रेफरेंसेस कि ऐसा कुछ ये फाइनल दिखने वाला है जनरली कि ऐसा कुछ दिखता है जस्ट लाइक अ माई आइडिया कि ऐसा कुछ कॉरिडोर है. नॉट गोइंग टू ब्लॉक आउट एवरीथिंग, मतलब पूरा, क्योंकि पूरे एक सेशन में इट्स नॉट इजी टू कवर क्योंकि काफ़ी सारे डिटेल्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो उसमें टाइम लगता है एंड द गोल इज टू जितना जल्दी हो सके you can see that overall scale size क्या है, वो प्लेयर इंटरेक्टिव है कि नहीं. एंड डिपेंड जनरली लास्ट टाइम हमने जैसे बात किया था, राइट. सो देयर इज अ थिंग वी टॉक्ड अबाउट गेम जॉनर पे कि वो किस टाइप का गेम पे आप काम कर रहे हो, लाइक अगर एक्शन एडवेंचर गेम है एंड दैट लाइक अ फर्स्ट पर्सन गेम है या थर्ड पर्सन गेम है, तो फर्स्ट पर्सन यू नो दैट ओनली वी कैन सी द हैंड. बट थर्ड पर्सन कैमरा है, मतलब कैमरा काफ़ी पीछे होता है कि कैरेक्टर के टॉप ऑफ द शोल्डर्स एंड एवरीथिंग.
तो उसमें जो नॉर्मल रियल वर्ल्ड स्केल से थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है ताकि जो कैमरा मूवमेंट भी इजीली हो सके और प्लेयर भी आपका मूव कर सके, तो स्पेसेस देख सकें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि करते कैसे, एंड वो करते करते आएगा। इट्स नॉट अबाउट कि एक बार में ही। सो डिपेंड ऑन कि गेम टाइप, गेम जॉनर किस पे काम कर रहे हो, एक्शन एडवेंचर है या फिर थर्ड पर्सन है, तो उस पे वो डिपेंड करता है कि अगर ये सीन मैं बना रहा हूँ तो ये किस टाइप के शॉट के लिए है या फिर वो किस टाइप के गेम के लिए है। अगर वो गेम जॉनर अलग है तो उसका मे बी स्केल थोड़ा बहुत वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो रियल वर्ल्ड स्केल में वो साइज दिखता है उतना ही यूज करना, इट्स नॉट लाइक दैट। आप एडजस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कैमरा। एंड एक जस्ट मैंने एक रफ लेआउट निकाला, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉरिडोर एंड देयर इज वन एज अ hallway is there and the another room. So ये just like a rough blockout map है। आप मैप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो, डिपेंड रफ पेपर में भी कर सकते हो कि दिस इज माय आइडिया एंड दिस इज द मैप विल बी देयर, कि प्लेयर यहाँ पे जाएगा एंड देन इट विल इंटरेक्ट समवेयर हेयर, और लाइटिंग के थ्रू डिपेंड। ठीक है। एंड अगर ओपन वर्ल्ड मैप बना रहे हो तो डिपेंड कि आप रफ ब्लॉकआउट भी कर सकते हो कि दिस विल बी माय सिटी एंड एवरीथिंग, ये ऐसा कुछ होगा। प्लानिंग जस्ट लाइक अ बिफोर गोइंग टू एग्जीक्यूट लाइक अ फाइनल मॉडल बनाने में लग गए, नहीं। सो बिफोर गोइंग टू सी कि वो ब्लॉकआउट किस तरह से होगा, प्लानिंग किस तरह से करोगे, ओके, पाथवे क्या होगा, अगर कैरेक्टर है तो यू कैन डिसाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ए प्लानिंग ग्रे बॉक्सिंग जब हम कर रहे होते हैं। सो जितना सिंपल हो सके यू कैन कन्वे द आइडिया, ओके दिस विल बी माय आइडिया एंड आई, ये जितने भी बॉक्सेस देख रहे हो दैट विल बी योर रिप्लेस विथ योर फाइनल मॉडल। ठीक है, दिस इज जनरली the idea of the block out of a gray boxing. So once you done and everything and आप replace करोगे, and जैसे कि मैंने भी बोला, and scale मैटर करता है। सो डिपेंड ऑन द गेम। सबसे पहली बात, अगर आप फर्स्ट पर्सन शूटर बना रहे हो और आपने फर्स्ट पर्सन शूटर के लिए बनाया और जो आपने ये कवर बनाया उस कैरेक्टर को छुपने के लिए, एंड दैट इज नॉट हाइट इनफ, तो कैरेक्टर उस पर छुप नहीं सकता, राइट। हेड विल बी विजिबल एंड इट विल बी शॉट आउट। सो मेक श्योर कि वो उससे थोड़ा सा कैरेक्टर से अबव हाइट हो ताकि वो कैरेक्टर उस पर हाइड आउट कर सके, एंड कैरेक्टर का स्केल के अकॉर्डिंग यू कैन हैव टू प्लान दिस वन। सो ये डिपेंड करता है किस टाइप के गेम्स बना रहे हो, किस टाइप के गेम्स के लिए ब्लॉक आउट करें। इट्स नॉट अबाउट कि हर बार स्केल इतना है तो मैं इतने ही रखूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन है, एक्शन एडवेंचर है, डजेंट मैटर कि वहाँ पे कैरेक्टर को छूट नहीं सकता, तो यू कैन ब्लॉक आउट एनीथिंग लाइक दैट। सो बट फर्स्ट पर्सन शूटर है, आप एपीएस गेम के लिए बना रहे हो, तो वहाँ के लिए यू हैव टू प्लान कि अगर कैरेक्टर हाइट क्राउच करता है तो इट हैज टू बी कवर ऑल द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, विच टाइप ऑफ गेम एंड योर टीम बिल्ड, विच टाइप ऑफ गेम आपकी इंडस्ट्री कैसी गेम बनाती है। डबल ए, ट्रिपल ए, अभी जहाँ पे मैं करता हूँ, एंड ये ट्रिपल ए ऐसा कुछ गेम पे नहीं काम करती है, दे आर वर्किंग ऑन ए आर वी आर गेम्स पे। सो अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट ए आर वी आर की गेम, सो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कंपेयर टू ट्रिपल ए गेम के थ्रू। ठीक है, ओके, सो लेट्स ओपन दिस। ओके, इससे पहले वाले वर्कशॉप में आई ऑलरेडी टोल्ड कि आप लोग को अनरियल कैसे यूज करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, डिफॉल्ट यू कैन इंस्टॉल इट एंड एवरीथिंग, एंड प्रोजेक्ट कैसे सेट करना है एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर इसमें भी किसी का डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन दिस चैट, I'll explain a little bit more before going to this one. Okay, how to join your team? लास्ट टाइम आपने भी यही पूछा था, हाउ टू जॉइन माय टीम, एंड मैंने आपको यही बोला था कि प्लीज़ अगर ज्वाइन करना है प्लीज़ शेयर पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो उस लेवल का होगा तो डेफिनेटली विल कनेक्ट विथ यू। ओके, टीम ज्वाइन करने से पहले जस्ट वांट टू नो कि आप करते क्या हो एंड आपका फोटे क्या है, एंड आपका डेमोरल क्या है, तो दैट डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, ओके, सो दिस इज माय एम्प्टी लेवल। मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड द हम लोग जो आज प्लान कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ऐसा कुछ।
कि कॉरिडोर है एंड देन कॉरिडोर हैज सम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. सो दिस इज एक्चुअल द फाइनल लुक कि ऐसे कुछ दिखने वाला है. बट ब्लॉकआउट वर्जन जब आप बनाओगे दैट विल बी द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ योर जो भी डिज़ाइन है. इट्स नॉट कि आपको किसी ने बोला कि ये बनाना है, दिस इज द रेफरेंस, एंड आप लग गए पूरे डिटेल में मॉडल करने के लिए. नो, सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन कि व्हेन यू प्लानिंग ऑल दोस थिंग्स. सो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर दैट, अगर मैं स्लाइड में वापस जाऊं थोड़ा बहुत, सो देयर इज अ सेक्शन वी कॉल्ड अबाउट modular kit, अगर if you remember that section, right? Yeah, ठीक है. Small kits, endless worlds, and we call this as a modular बोलने का रीजन ये है, I'll show that कि होता क्या है वो. ठीक है. So that modular means आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है. सो सपोज इफ यू सी दिस, लाइक अगर मैं ये कॉरिडोर देखता हूँ, राइट. सो अगर मुझे ये बनाना है तो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दिस कि मैं कितना कम रिसोर्सेज यूज करके इसको बना सकता हूँ, और मेरे पास व्हाट आर द एलिमेंट वी हैव टू क्रिएट एज लाइक एज अ मॉडलर. ठीक है. अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द वन आई कैन सी, द वन वॉल विद द विंडो होल. ठीक है. सो दिस इज द वन मॉडल यू कैन मेक window separately. So this is other one I can see here. This is a pillar. So we can make this as a separately one. Okay. And this part can be divided into two walls. So one for this and one for with the doorway. So like one model, two, three. So we can create this three and we can reuse everything wherever we can see जहाँ पे भी इस तरह के कुछ parts आते हैं. So if you can see somewhere exactly यहाँ पे भी वैसा कुछ है when you seeing like this. ठीक है. तो जब आप इस तरह के मॉडलर किट बनाते हो, इट विल शेयर द सेम टेक्सचर, राइट, एंड इट विल शेयर द सेम मटेरियल. एंड उससे क्या होगा कि आपके जो रिसोर्सेस है दैट विल बी ऑप्टिमाइज्ड, एंड वो काफ़ी कम मेमोरी लेगा आपके सिस्टम का. और जो बंदा गेम खेल भी रहा होगा, जिसने ये गेम यूज़ भी कर रहा होगा, उसका रिसोर्स भी काफ़ी कम यूज़ होगा. तो द मेन गोल इज़ टू keep it optimized, जितना कम हो सके उतना रिसोर्सेज यूज करें, एंड देन प्लस इट विल गिव द हाईएस्ट परफॉर्मेंस. ठीक है. ये जनरली गोल होता है अगर कोई भी आप गेमिंग में हो या गेम के लिए काम कर रहे हो, तो उनका मेन मोटो ये होता है कि द यूजर कैन एक्सपीरियंस द मच हायर परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्टिंग है. ठीक है. सो आप जब बनाओगे तो प्लीज़ ये मेक श्योर रखना. एंड डेफिनेटली जो आपके सीनियर होंगे, जो आर्ट डायरेक्टर होंगे, दे डेफिनेटली विल टेल यू कि डू कैसे करना है. अगर नहीं पता है, बट यू शुड नो कि आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट प्लान आउट, क्योंकि मैं क्या क्या इसमें से ले सकता हूँ और किस तरह से बना सकता हूँ. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्केल. जैसे लेट मी समवेयर हियर. ओके. सो दिस इज, अब जो क्यूब देख रहे हो, दिस इज लाइक अ 2 मीटर बाई 2 मीटर का स्केल है. सो ऑलवेज जनरली यूज एज अ लाइक अ स्केलिंग एज अ लाइक अ टाइलेबल. अगर हम टेक्सचर भी बना रहे तो वी आर क्रिएट एज अ लाइक ए स्क्वायर टेक्सचर. सो हम उसको रीयूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हर एक बिल्डिंग के लिए, हर एक वॉल के लिए हम अलग अलग टेक्सचर बनाएंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. सो अगर लेट्स मी गो बैक टू दिस न्यू बेसिक वन. Okay, so I'm using a modular kit that is done by Quixel, and ये आपको फैब मार्केट प्लेस में easily अवेलेबल मिल जाएगा, फ्री है. आप यूज़ कर सकते हो टू डिज़ाइन आप अपने लिए जो भी मॉड्यूलर किट बना रहे हो, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. So, ऐसा नहीं है कि ये पेड है, ये फ्री वर्जन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ फाइन. सो जब मैं मॉड्यूलर की बात कर रहा था, दैट इज़ द थिंग इज दिस. ठीक है. And if you see the wall, okay, so this is one section for the wall, this is the other section, and this is the other section. You can see it's 2 meter by 2 meter. This is also 2 meter. This is 1 meter, and this is half meter, right? तो now जो आपके पास wall है, so that is अगर अगर मैं इसको
कंपाइल करूँ या पूरे अच्छे से विल डू दैट. So that is generally will give you this. ठीक है. So एक पूरा लाइक एक मॉड्यूलर किट हो गया. आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस anywhere and to create this the whole walls and everything. So this is generally the option uh, you have to look for. So ये generally final version of this model है with textures and everything. I'm expert in ideation and animation and play testing. Okay. So if you do the play testing, definitely अगर play testing करते हो तो definitely आपको developing के side पता होगा. And you are a junior developer or anything like that. अगर play testing करते हो तो generally play testing में क्या करते हो? That is I just want to know. क्योंकि play tester का जितना भी काम होता है, they have to identify the bugs and उनको वो find out करना होता है and then give the solution to कैसे उसको solve करना. ठीक है. So अगर आप as a play tester हो और सब play testing करते हो तो okay. So next set again we'll see. It's like a window, and there's a of three different window versions are there. So one for this one for single opening, one for double opening, and other for one. It's a bigger one. ठीक है. So these are the modular. इसको एक भी हम बना सकते थे अगर जैसे जो भी आर्टिस्ट इनिशियली दे विल वर्क ऑन दिस, वो क्या करेगा, ये पूरा एक में बना देगा. बट दिस इज नॉट द वे टू डू इट. ठीक है. सो जो मॉड्यूलर सेटअप बना रहे हो दैट हैज टू बी ऑलवेज 2 मीटर, ताकि वो जो टेक्सचर स्केल है दैट हैज टू बी ऑलवेज कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर जब आप ये बना रहे हो, लेट्स सी. ओके. सो दैट हैज टू बी मॉड्यूलर. तो मॉड्यूलर का मतलब ही यही है ताकि वो रीयूजेबल हो, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो. एंड अगर आप देखोगे तो इसमें दिस इज द सेम थिंग. इट्स अ मॉड्यूलर सेट. आप देखोगे तो वन दिस इज ओपनिंग द विंडो इज सेपरेटली आप लगा सकते हो. दिस अदर वन, दिस अ डोरवे आल्सो. सो ये सब कुछ मॉड्यूलर है एंड देन यू व्हेन यू कंबाइन एवरीथिंग इनटू वन इट विल क्रिएट एज अ वन कंप्लीट सेट. ठीक है. बाकी जो भी चीजें देख रहे हो दैट इज अ सेट ड्रेसिंग एवरीथिंग, उसको आप सेपरेटली कर सकते हो. दैट इज अ वी कॉल पॉलिसी. उसमें टाइम लगता है एंड यू हैव टू गिव देम अ टाइम लिटिल बिट, मे बी एक 2 दिन और मे बी 1 डे. दैट इज मोर देन इनफ टू पॉलिश एवरीथिंग कि वो ओवरऑल डिटेल्स जिस तरह से ये देख रहे हो कि किस तरह से है और आपका कॉन्सेप्ट क्या है डिटेल. अगर मान लो कि इफ यू आर वर्किंग समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके. सो ये भी सेम ही वर्जन का है. यू कैन से दिस द हॉलवे, इधर एक कॉरिडोर है, दिस इज अदर साइड आल्सो. सो यू कैन सी द सेम थिंग. दिस इज वन मॉड्यूलर सेट, दिस इज द वन वॉल. तो ये पूरा वॉल एक नहीं बनेगा. सो दिस इज जनरली विल डिवाइड इनटू हाफ सेक्शन ऑफ दिस. ठीक है. okay. So let's block out this. ओके. अनब्लॉक आउट करने के लिए जनरली आई एम यूजिंग जितना बेसिक मेश हो सकता है, नॉट दिस वन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक शेप. ओके. सो देयर इज अ दो ऑप्शन आपके पास. सो सपोज इफ आई कैन गो टू द बेसिक BSP मॉडल्स और बेसिक शेप्स, यू कैन ब्लॉक आउट विद दैट. ठीक है. सो अगर मैं ज्योमेट्री में जाता हूँ, यू कैन सी दिस वी हैव दिस क्यूब. ठीक है. एंड दिस इज जनरली 2 मीटर बाय 2 मीटर. अगर आप देखोगे why I'm talking about this is 2 meter by 2 meter. And if I come down, you can see the x, y, and z, that is 200, 200, and 200. So Unreal by default is a centimeter. So that means is a 2 meter. ठीक है. अगर मैं इसको 100 या 100 रखता हूँ, so this is 1 meter. तो यू शुड नो द स्केल. आपको स्केल पता होना चाहिए. ठीक है. आप जनरली डोंट डू दिस एज लाइक अ मैनुअल स्केल. तो ये मैच नहीं करेगा फिर आपके स्केलिंग के साथ. मेक श्योर जब भी आप स्केल चेंज कर रहे हो आपको पता है कि नहीं मुझे 4 मीटर चाहिए, राइट. सो 400 centimeter विद दिस. ओके. and maybe the thickness around 10 centimeter for that wall or anything, and the height you will decide कि कितना चाहिए, maybe 500 centimeter. So this is like generally your wall height या फिर जो भी आप बना रहे हो. So like that.
तो ब्लॉकआउट कर रहे हो तो मेक श्योर व्हेन यू डू दैट, एक ये वर्जन है आप बेसिक मॉडल से ब्लॉकआउट कर सकते हो। और मेरा यहाँ पे करने का मतलब यही है कि when I do this I can see the real time lighting and everything, otherwise I don't have to go, आप ब्लेंडर में कर रहे हो या किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, यू कैन नॉट सी दैट, अगर मैं प्ले करता हूँ तो यू कैन नॉट सी दैट कि ओवरऑल स्केल कैसा दिख रहा है या फिर आपका कैरेक्टर का साइज क्या है एवरीथिंग। ठीक है, सो लेट मी ऐड समथिंग इनटू दिस, ऐड फीचर, and this time I'll add a third person character. So I want to see कि over scale कैसा दिखता है. Add to this project. Just a second, as will add. Get done. And then I go to this game section and game mode override. Let's see BP third person game mode. Okay. And now if I can play, hopefully my character is there, right? Now I can walk and see कि ये जो वॉल का साइज है वो कितना है, वो सही है कि नहीं. So that way you can understand कि जो आप स्केल बना रहे हो, जो कॉरिडोर बना रहे हो, उसका साइज क्या है, वो ओवरऑल उससे मैच करता है कि नहीं. सो दैट इज जनरली योर गोल हैज टू डू दैट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अनरियल एंड सिंगल वन सॉफ्टवेयर. नो, अगर वंस यू डन द ब्लॉकआउट, आप एक्सपोर्ट करके दे सकते हो मैशेस को टू योर मॉडलर, जो भी हाई पॉली मॉडल कर रहा है या फिर जो भी highest version model बना रहा है, so they can work on this and then can give you this the highest like detailed version of model with the texture and everything. ठीक है, so please make sure first your blockout will be done and then we'll work on this. So एक तो ये ऑप्शन है यूज करने का, दिस इज वी कॉल ज्योमेट्री मैशेस. सो आपके पास ऑप्शन है, सपोज अब इसी में से मुझे विंडो या फिर डोरवे निकालना, तो यू कैन जस्ट स्नैप इट आउट कि ओके दिस इज माय सेकंड वर्जन ऑफ वॉल एंड थर्ड वर्जन इन पिलर इन बिटवीन. ठीक है, सो अगर देखोगे तो काफी सारे पिलर्स है, there's one, so one section here, one section, बट बीच में कटआउट भी है, राइट. सो दोज थिंग यू कैन डू इट मैनुअली. अगर मैं बात करूँ तो इफ आई कैन टेक दिस वन, एंड इस mesh के अंदर एक ऑप्शन भी है कि वी कैन subtract. Suppose I can give this a thickness little bit, maybe around 20. Okay, let's say around 200. Okay, so my window size is this much. Okay, so I can just use this as a window hole and everything. So you have this option, and once you come down here, that is called brush type, and once you add this, subtract, that hole will be there. Just that much, इतना ही करना है. ठीक है, अगर मुझे एक और होल चाहिए था, विंडो चाहिए था, आई कैन ऐड दिस इनटू द अदर विंडो इन दिस, एज सिंपल एज इट इज. ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लॉकआउट है दैट विल बी मच फास्टर, एंड देन यू कैन ब्लॉक आउट मच इजियर देन बिफोर. सो आप क्विकली ब्लॉकआउट कर सकते हो. वंस योर ब्लॉकआउट इज डन, you can export that mesh to your 3D team and everything, so they can create the final version of this like this way. ठीक है, so ये आप नहीं डिसाइड करोगे, and according to your reference, it's not about कि आप randomly कर लो. ठीक है, okay, let me see. I am serious and in class 9 I want to share portfolio of ideation and animation. Definitely, please share करो आपका जो भी portfolio है. We'll look into this and then we'll update. Okay, so let's block out. So the एक तो वर्जन ये है, आप बेसिक मैश यूज कर सकते हो, एंड सेकेंड वर्जन जो मैं यूज करता हूँ जनरली मोस्ट ऑफ दैन, दिस इज अ ब्लॉकआउट टू बाय डिफॉल्ट. सो ये भी वैसे ही है, बट इसमें यू हैव अ मोस्ट फ्यू कंट्रोल्स. अगर इफ यू सी दिस वन, दिस इज ऑल्सो दैट every block has a like a 50 centimeter. This is like a 1 meter by 1 meter, right? So you can see the box size is 100, 100 and 100. That is a 1 meter by 1 meter. So if I want to increase the size or anything like this of the box, I can increase the size. So this is generally as a blockout too. So we can work on this and we can create this as a hallway kya size hai, the wall ka kya size and everything. Okay. So I'll use this tool to block out the whole corridor and we'll see. Okay.
Let me block out it and then I'll show you the final version दिखता कैसे है. Already done it क्योंकि पूरा final version to do it in the one go and with the lighting and everything generally take time. So you'll get the idea कि करना कैसे है once you've done that, and then you will replace all the blockout meshes with your final model. Okay, I'll just show the one part so you can see that is the same thing we have to do. Okay, just take this as ideation. Okay, let me check the scales and everything. So this is my floor size. That floor is like a 520 centimeter. That wall height is around 400 centimeter. ठीक है, अब वो डिसाइड कैसे करोगे? And already I told कि जो मेरा grid है that is like a 420 centimeter, right? So it's like a 4 meter. Okay, so let's see, this is around 1 2 4. And एक चीज और आप कर सकते हो before going to this grid snapping. So please keep it on. तो इससे क्या होगा कि it will be easy to snapping, and जो कि आप quickly scale कर सकते हो, and then that can be done easily, right? 1 2. So 1 2 and 3 and 4 meter. Okay, so this is the 4 meter height, and let me see the width. 1 second. And इससे फायदा ये है कि वंस यू डूइंग दिस ब्लॉकआउट, कभी भी अगर स्टेज पे व्हेन यू सी ओके दिस इज नॉट करेक्ट एंड एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट, आप कभी भी आके चेंज कर सकते हो. बहुत इजी है चेंज करना बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा व्हेन यू डू दिस. बट व्हेन यू क्रिएट एज अ फाइनल मॉडल एंड फिर आप चेंज करते हो तो टाइम इज मनी. सो अंडरस्टैंड दिस. अगर आप टाइम लगाते हो बहुत ज़्यादा टाइम कि उसको क्लीन करने में, एंड देन वंस यू हैव दिस फाइनल वर्जन, सो जनरली टेक टाइम. सो प्लीज मेक श्योर जब आप ये बना रहे हो जितना इजी हो सके डू दैट ब्लॉकआउट फर्स्ट, एंड देन फिर बाद में आके आप उसको वो कर सकते हो, राइट? सो लेट्स सी, एंड द फ्लोर size is like 520. So we'll take this again, copy it. Okay, so I'll take this one. Okay, meanwhile if you have any doubt or anything like that, please let me know and then I'll connect. Okay, so this is my one floor size. ठीक है, width depend on that, आप change कर सकते हो, it's totally up to you. And once you have the final version of layout and you can change it, so it's not about that. ठीक है, same thing, I'll copy this wall for other side. So this is just as a rough idea कि आपका जो initial blockout है, how that width has to be and anything. And when you have a character, so let me say clear start here. I'll keep this guy somewhere here so I can start from here. Well, initially when I play. Okay, so just understand the feel of this room कि वो सही है कि नहीं, the overall height and everything. Just a second. Okay, so now we can see. So overall it's fine. एक बार block out करो and then see iterate again and see कि overall दिखता कैसे है, and then we'll do that again. Where to share portfolio. आप चैट में शेयर कर सकते हो जो भी आपका पोर्टफोलियो है, डेफिनेटली इस स्ट्रीम के चैट पे शेयर कर सकते हो. एंड व्हेन यू लॉन्च योर कोर्स, डेफिनेटली काफ़ी जल्दी आएगा. ओके, एंड डेफिनेटली विल अपडेट यू. अगर आप ऑलरेडी इस चैनल में हो, एक्टिव हो, तो यू गेट द अपडेट. ओके, सो दैट्स अ थिंग. While I'm working, I'll be keep quiet little bit. And अगर आपको पूछना है कुछ भी, drop me in the chat so I can reply to you. Okay, I'll try to do it as faster as can ताकि आपका time waste ना हो
and meanwhile you can understand ki overall how we do all those things. Okay, so this is generally I'm just taking it as a like a blockout कि जो भी concept था and everything, and from there to the overall कि दिखता कैसे, अगर आपको लगता है कि नहीं I just need a little bit more room or maybe little bit more height, आप कभी भी आके change कर सकते हो, right? So it's totally up to you, and that's why generally when I start I'll start with without any lighting and all, but for you I just added a light so आप at least देख सको कि क्या हो रहा है and everything. And sometimes I don't like the color, so I can change it and keep it maybe the gray, that like thing. Okay. For the wall generally I'll keep it gray. Okay. Same thing goes here. And this only about कि what your concept is, and जो आप concept बना रहे हो क्या है, and just ignore the details जितने की आप देख रहे हो कि pipes है and all those things, छोटे छोटे elements है, वो कभी भी आप add कर सकते हो once your layout and the gray boxing is done. And जितना जितना मर्जी चाहो you can do all those things, detailing and this things and all. I'll tell you about कि ये सारा है क्या, कि इसको texture में करना है कि नहीं करना है, how much you can do the texture and how much you can achieve inside of Unreal Engine. Okay, so we'll keep this one. So let's see. Okay, so there is a one section we call as a corridor. यहाँ पे अब देखोगे there is a door and there's the inside of room. Okay, what we can do in this, we have the section we call doorway. Okay, अब ये अभी जैसे मैंने उस बेसिक शेप यूज करके बनाया था वैसे भी बना सकते हो. दिस इज टोटली अप टू यू how you want to do that. Okay, and because my snapping on, so it's very easy to snap my models exactly where I want. Okay, so now I can work on this. That's fine. Okay, and now the inside part where the door should be and everything, I can अगर मैं जाऊँ तो you can see the wall thickness. I can place it and see where my door has to be. Door kitna thick hoga and everything. So I can see it's very broad. Okay, and I can do this much maybe. Okay, and let's play and see with your character कि that door वो feel या रहा है कि नहीं and everything, right? So that is generally keep it camera क्योंकि आप third person बना रहे हो तो you have to give the space for the camera also. ठीक है, so suppose अगर over the shoulder camera, so suppose if I am crossing this door and अगर आपका door बहुत छोटा है, suppose like this. Okay, and when I cross it, so you can see आपका जो camera है that will be cut out somewhere here. So please make sure जब आप बनाते हो तो it should not come in the path of your camera also. So आपका जो कैरेक्टर का हाइट है एंड प्लस जो कैमरा का हाइट है दैट आल्सो यू हैव टू बी इंक्लूड. इट्स नॉट अबाउट कि जितना मेजरमेंट हमें रियल वर्ल्ड डोर का होता है उतना रखेंगे, इट्स उससे थोड़ा अब सो दैट कैरेक्टर कैन फील सेपरेटली, और या फिर वहाँ पे आप मूवमेंट कर रहे हो एवरीथिंग सो दैट विल प्लेस देयर. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट हैज टू बी हाइट समवेयर. Okay, so let's say around maybe 110, little bit wider. Just want to see with this play. And you can iterate more. So जब आप देखते हो तो you can iterate this. So that is totally up to you. Okay. And again, I'll take this wall and my concept is something like that. Okay. And that will be generally this is just about to block out कि generally आपकी पूरी scene कैसे दिखती है and everything. Once you block out is done, so then you can play and iterate
कि वो दिखता कैसे है, ठीक है। एंड मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। So this is the corridor other side, जहाँ पे there's also has a another room and everything. Okay, and then I'll close this section so that okay, this is little too big, so मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ so I can see where my other room will also start. Okay, like this, and from here there's another room. Okay, and अगर आपने map नहीं देखा है तो you can see this. So this is I'm going for. You can see. Okay, so there's a one door we have created here, and this small block out, and this is another room here, and then another room corridor is there. Okay. So जो भी आपका रफ मैप आपने बनाया होगा, suppose you have another thing here कि लूप आपने बनाया ऐसा कुछ जा रहा है, okay, maybe underground area है, they have stairs on the downstairs. It's totally about ये concept किस तरह से बना रहे हो. There's another corridor somewhere here कि एक और कॉरिडोर है यहाँ पे. दिस इज द कॉरिडोर विथ ये ऑल अबाउट द कॉरिडोर. दिस अनदर कॉरिडोर समवेयर हियर कि जहाँ पे एक रूम जा रही है एंड देन इनसाइड देयर अनदर पाथवे इज देयर. ओके, सो ये टोटली आपका कॉन्सेप्ट है, हाउ यू आर डूइंग इट एंड everything. So I'll keep this here so you can understand what I'm doing. Okay, meanwhile let me know, and if you have any doubt I'll explain कि कैसे करना है, ठीक है. So this is the thing, same thing. Agar if you see that same concept, if I can keep it unlit, so we can say this how we are going about that. Okay, so I'll just copy all the walls and copy it somewhere here. Okay, so this is the one side, and let's go for the other one. Let's copy it one more. So now I'll close this one. I'll close this the other side here. Okay, and उसके बाद you have the freedom to add a window. कहाँ पे add करना है, नहीं करना है, where should be the window will be and everything. It's totally up to you. आपको किस तरह करना है and how you want to do that. ठीक है. So this is the one side is done, and now see with the play testing how this is look like. Okay, and it feel natural. काफी सारे space है door के पास. We can do that. Now we have a space also good, and now you have this small corridor here. This is also good space कि अगर मैं क्रॉस भी कर रहा हूँ तो ना have a camera to breathing space, and then other room also is there. Okay, so there's a one more room we have to create here इस side पे जो कि we have missed if you see in this section here. Okay, so अभी तक जितना भी मैंने बनाया it's all about just as a block out. It's not about कि यार मेरा कुछ जितने भी मैंने आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट किया दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. मैं पहली बात बता रहा हूँ, उनको अगर दिया जाता है तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सेक्शन कि एक्चुअल मॉड्यूलर किट क्या होता है. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. एंड सबसे पहली बात दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि इस तरह से भी कुछ मॉड्यूलर किट बनते हैं. एंड मोस्टली जितने भी आप गेमिंग इंडस्ट्री में देखोगे एंड व्हेन यू सी द
environment design and everything depend on this modular set. ठीक है, and if you really want to see कि होता कैसे है, what they do, go in art session, search for the level design, just as a level design. You will see bunch of details are there, how the artists are doing it, and minimum models होंगे, and then उसी को use करके the whole city they will create. ठीक है, the detailing and everything, and I'll show you this. Maybe let me say, okay, I'll connect and then I'll let me find this one. Okay, let me find something. Okay, so there's one artist and काफी सारे artists है. It's not about कि एक artist. There's a so many artists. सबका काम ऐसे ही है, and generally they do this kind of thing. Okay, and she's a freelancer 3D environment and prop artist. If you see this as a label, अगर मैं बात करूँ, just imagine अगर आप लोग को दिया जाता, आप लोग क्या करोगे? Each and everything you guys will model individually, but I'll show you किसने क्या किया है and how they seeded all those environment and everything. अगर आप देखोगे तो काफी different different buildings हैं, right? But मेरे हिसाब से देखो, there's only one or two maybe, maybe two or three. So this one and this one almost similar, but only the doorways change. So that is a modular set. Okay, texture is different, but काफी minimum sets है. अगर इसने डाला होगा कहीं पे in the down the line, so if you see the whole city almost पूरा एक वो बनाया हुआ है, because और ऑलमोस्ट सारे सिमिलर ही दिख रहे हैं, बट ओनली द टेक्सचर इज लिटिल बिट डिफरेंट. वो इंजन के अंदर ही चेंज कर सकते हो. यू कैन सी दिस इज अ प्रॉप्स, काफी मिनिमम है, एंड आप भी देखोगे तो काफी जगह यूज किया उसको, राइट? सेम थिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग, पोस्टर्स एंड ऑल काफी मिनिमम है. एंड यू कैन सी द डोर सेट, इन्होंने डोर सेट अलग अलग बनाए एंड विंडो सेट अलग अलग बनाए, उसको हर जगह पे यूज किया हुआ है, राइट? यू कैन सी दिस हियर हियर, कहीं ओपन है कहीं डोर, बट है सेम. दैट इज अ मॉड्यूलर किट, राइट? And if you see the building, only the 5 or 6 buildings are there. That's it. You can see that. And but आपके पास देखोगे तो you have the whole bunch of cities are done with the help of this kind of modularity. That is we call kit. ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट को ये नहीं पता है. And once they do architecture and all, they will create the whole building in a one single mesh, and that will create some problem with your texture and texture scaling that is not uniform and everything. So generally इसने दो या तीन काफी minimum tileable texture when you can see these all are the tileable texture and these all are the trim sheet. Okay, so use most of them. You can see this the plank texture here, this is the rooftop, the wall texture is there, just simple tileable textures. Okay, it's not about कि पूरी building का texture उसने क्या, नहीं, just using the tileable texture and to use a color. Okay, तो इस तरह का चीजें जनरली व्हेन एज अ एनवायरनमेंट आर्टिस्ट Be व्हेन able to यू tell डू, early on, like, is this doing what I want it to? तो दे जनरली डू दिस काइंड ऑफ थिंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मॉड्यूलर होता क्या है and how this kind of modular set they will make. एंड मैं तो बोलूँगा स्टार्टिंग में विल स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल थिंग. बहुत छोटे से स्टार्ट करो. either make one corridor or make one hallway, like this kind of thing. Okay, and search for Last of Us and all. Just go and see what their environment design, अगर आप environment artist हो, environment design आपको अच्छा लगता है, so प्लीज सी इट. एंड देन उसके बाद आपको प्रॉप्स जितने भी बना रहे हो, सी द डिटेल एंड एवरीथिंग, जितना करना है कर सकते हो, बट ओवरऑल scales and everything has to look good. Okay, so this overall is looking good. I just want to create the hallway somewhere here, and the one hallway will goes around this area. Okay, okay, अभी तक किसी को कोई डाउट है? So anyone watching in this live or anything like that, please let me know in this chat box. So we'll connect and then we'll let you know about that कि कैसे करना है. Okay, okay. So this is the overall. You can say this according to your reference. Okay, I'll open this area. Okay, and you can see I have some reference here somewhere. Okay, so this area has going other corridor somewhere here. Okay,
Let me open this too. Okay, cool. एंड इट डजंट मैटर कि ये पूरा फाइनल है, आपको कभी भी आके व्हेन यू थिंक यू नहीं ये दिस इज नॉट गोइंग वेल और एनीथिंग लाइक दैट, वी नीड टू चेंज दैट, डेफिनेटली यू गाइस कैन डू दैट. ठीक है, सो दिस इज नॉट द फाइनल वर्जन और एनीथिंग लाइक दैट. एंड इट्स नॉट अबाउट कि एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट. आप यहाँ गलतियाँ कर सकते हो, दिस इज यू हैव द फ्रीडम टू डू ऑल दिस थिंग. ठीक है, सेम थिंग आई विल कॉपी दिस फ्लोर and follow this corridor. I'm just roughing the idea, जो भी concept है मेरे पास. I'm just roughing the measurement and everything. It's not about कि everything has to be perfect. It's just about like how we do all those. Okay. So let me go back here and this player start. I'll move it somewhere. Yeah. So when I start this, my play, so character should start somewhere here. Cool. Okay. I don't need a floor. So I delete that. So this is my actual floor will be. Okay. And let me quickly copy the whole floor size other side. एनिमेशन का आइडिएशन एंड स्टोरी का पोर्टफोलियो किस वेबसाइट से बनाए, फोन से. आई एम नॉट अंडरस्टैंड. पोर्टफोलियो किस वेबसाइट से बनाए फोन से, आई एम नॉट अंडरस्टैंड. पोर्टफोलियो किसी वेबसाइट में नहीं बनता. आप पूछना क्या चाहते हो प्लीज, एक बार प्लीज चेक इट. आपने बोला आप एनिमेशन करते हो एंड एवरीथिंग, फिर अगेन यू आर आस्किंग कि पोर्टफोलियो कौन सा वेबसाइट से बनाते हैं, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो प्लीज हैव क्लैरिटी, आपको करना क्या. So this is all the rough I'm doing it, and meanwhile if I can see is there any changes or anything I can come and do that, I'll see that how that will feel. Okay, and overlapping chalega, because when you're doing this kind of blockout and everything that can be done in overlapping. So ऐसा नहीं है कि overlapping नहीं होना चाहिए और ऐसा ही होगा. It's, you can do the overlapping, doesn't matter. Okay, so no problem with the overlapping and anything like that. So okay, so this is almost done. I'm just seeing the chart. I'm not sure about आप वेबसाइट से बनाना चाहते हो, नहीं समझा. प्लीज अगर आप बताओगे तो आई कैन अंडरस्टैंड. Okay, and let's play and see that. Okay, so this is my other side and this is the other room I have to clear. Okay, let's open this. Okay, so this area will be other corridor, other, but that will be blocked out. Okay, so let me snap it here. Maybe one more wall pattern. And
This will be somewhere. Okay, and I'll close this. And this is the blocked out. Player cannot go outside of this one. So आप इस area पे कुछ भी कर सकते हो. That can be rebels, building 2 TV है या फिर all you decide करना क्या है, right? So if you see somewhere here, there's a blocked out area is there, cannot go outside or something like that. It's totally up to you how you want to do that. Okay, and I want to create a roof. Simple, same, copy the floor and keep it in the top. Okay, so let's get somewhere here. Yeah, so this is my the roof area, and maybe I have to increase a little bit the size of this one. And let me see which side is this. So okay, more than enough. Now you can see with this how this is filled with your corridor. Okay, so this is the roughly. Let me block everything, and we'll see the actual with the lighting and everything. कि वो दिखता कैसे है, and then we'll do the basic default lighting to guide a player कि जाना कहाँ है, right? Generally, I guess last time भी मैंने बोला था guide a player through as a eye as a direction, and you can show that okay, there's a danger, there it should not go this area or this side. So वो define कैसे करोगे? Define करने का सबसे best तरीका है with light. I'll show that. ठीक है? So let me close this section also, and then I'll cover it up. Okay. And it's not about key which kind of tool I'm using it and what kind of tool and anything. It's totally up to you. आप क्या use करना चाहते हो. Okay. So generally this take time. आप आराम से बैठो and do you have a concept and everything and start block it out. And once you have a reference, it's not about key. Just take as a rough idea. It's not about that key. मुझे वैसे ही करना है. So you'll get this key, what the rough idea will be and everything. So just see how those will look like. Okay. So now this is, you can see this is my corridor area. This is where the, uh, let me delete that height fog. Generally, we don't need that. So there's expensive height fog. We don't need that height fog generally. Let's see now, play and see. Okay, so this is the other corridor area where we'll be blocked, and this is the other room, and where we can see the other side, it's like a totally opened. Can do this. Okay, let's come back here, and overall, this area we have to close it up. Let me close this section, and before we are going to this, let me decrease the slide. Its intensity is too high with my scene and everything. Okay. Okay, let's quickly close this too. It's fine.
Okay, I'll just open this one section because I want this area has to be another twist. Okay, so as I design, you can see the somewhere here. So it's going for it. Okay, this was okay, and from this area, I'll create one room also. So let me go to this section. Okay, so with this, create this. Just see, once you build everything, just see कि वो दिखता कैसे है. But those are and everything. And it's totally depend क्या बना क्या रहे हो. And if you know that if you have a concept like that, how that will be look like. ठीक है. And meanwhile, please, किसी भी point of time, if you have any doubt, why we are doing all those things, सिर्फ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, and why we cannot doing in other DCC software and everything, please let me know. Already I explained कि क्यों कर रहे हैं, so you can understand that. ठीक है. So this is the other section of that room, जो कि हम लोग यहाँ से close out करने वाले हैं. See here, it's almost done. Okay, मैंने फ्लोर को मल्टीपल इसलिए रखा हुआ एंड आई एम नॉट कीपिंग दिस. मैं चाहता तो इस फ्लोर को पूरा एक प्लेन बना सकता था, बट द प्रॉब्लम विल कम जब आप इसको एज अ टाइलेबल टेक्सचर बनाओगे, राइट. वी कैन नॉट डू दिस एज लाइक वन टाइलिंग टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग. अगर मैं एक्चुअल फ्लोर का साइज देखूं तो दैट फ्लोर हैज टू बी समवेयर this big. So if I place here, so this is my floor size. अगर आप देखोगे तो I'll replace the whole the building and everything with this as a floor, and that will generally going to use this as a floor for that the whole block up. So अगर मैं बात करूँ, suppose let's see, एक छोटा सा डेमो यहाँ देख लेते हैं what that is going to be. Okay, so let's replace this floor somewhere here. Okay, with this and before doing this, it's better optimize and do some file management. Okay, so let me, you can see all the blockouts. Okay, so this is all are my blockouts. So I can go to label and I'll create a empty label somewhere here. Okay, create new empty, and let's save this one around inside of my Greyboxing. So this is my Greyboxing map labels, and this is my initial blockout. Okay, so that way whenever I come and see that कि मेरा scene कैसा दिखता है, so I can do this way. So now I can go my outliner. You can see everything is selected. जितने भी चीजें आपने बनाई थी, I can right click and move selected actor to this level. So what will happen, आपको कभी भी अगर आपकी टीम मांगती है कि नहीं आपने जो ब्लॉकआउट बनाया है that is already done and वो फाइनल हो गया है, so that blockout all in this one layer आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके अपने टीम को दे सकते हो, राइट. सो इट्स ओनली अबाउट, अभी तो सिर्फ एक ही फ्लोर एक ही कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल होंगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ मैशेस, लॉट ऑफ मॉडल्स आर देयर, तो मल्टीपल आके सेलेक्ट नहीं करो. इट्स बेटर है कि
keep it as a one isolated layer, so anytime anyone can come, उनको भी पता रहेगा, okay, this is the initial my block out and that was my final layout and everything. So I can send this to my modeling team and all the departments so they can use this section here. Okay, so let me close this area first, then I'll show that key how that actual floor is look like. Okay, so it's fine for the overlapping, that will be okay, no problem with that. And then I'll copy this as a roof. Okay, and अगर room काफी बड़ा है, you can come and iterate this one and everything. It's totally up to you how you want to do that. Okay, and let me close this somewhere here. So this will close out this area. Okay, and let me close this section quickly. Okay, I'll close this section up. Okay, so when you launch your course, fine, done, and we don't need this one. Let's close this one. So the thing is, initially when you're doing it, make sure ki everything has to be in the right place when you do that. And once you feel ki your blockout is done, and then you can pass on to your modeling team. Okay, so now if I can play, actually I deleted that. We'll see my play start. Okay, and let me go back to my okay, so yeah, that also has to be into this one. Okay, and let me check with this. Okay, so the लेवल इज एक्चुअली मैंने उसको लेवल में डाला है ना, तो व्हेन यू प्ले दिस एज इनिशियली इट नॉट गोइंग टू डिटेक्ट. सो अभी के लिए डिफॉल्ट ही रखते हैं, देन व्हेन वी मूव दैट इनटू एज लाइक अ ब्लॉकआउट स्टेज डन, देन वी विल सेपरेट दिस वन इनटू as a separate level. Okay, so let's move and select it here. Now play. And then back to this. Okay, so now we can see the whole area has to be somewhere here. This is the one corridor. This one is we have to block this wall, and this is the other corridor area. So when you do this blocking and everything, just feel कि आपने जो level बनाया है, that is according to your concept, वो playable है कि नहीं, वो कितना interactive है, अगर वो first person shooter है या third person है, तो enough element उस scene में आपके है कि नहीं and everything. So that has to be understand जब आप बना रहे हो. So please make sure that can be done. ठीक है, so let me close these walls and then I'll show you the basic how we can do with this, like basic light pass to block out everything, and then we can close it with this one. Okay, and keep it overlap, and let me close this rooftop also. Okay, meanwhile if you have any doubt, please let me know. Okay, and let me close this door.
Okay, and let me close this one also. And overlapping can be fine. It's not that issue. क्योंकि anyhow after that you will replace with the proper जो भी आपका models and everything that can be replaced. So don't worry about that कि overlapping है या फिर this is not going to be a final model and everything. Okay, I'll close this section also. I don't want any light in this area. Okay, but I just want our door into this section. So we can go here and we have this as a doorway as I told before. So we can use this one as for the door. Okay, let me move it up. The thing. Okay, so done. And let me lower down the height. And this is my, maybe the double door I can use it here, or maybe the window. It's totally, I'll decide later how that will be and वो कैसा दिखेगा and everything. So this is your entry for this point, and where from here we can go somewhere here. Now you have to decide कि आपने जो बनाया है where you need a windows and all those kind of thing. Okay, so either if you have a concept to show most of the things where you want to add those details. Okay, so now when I play now, and this is the one way of light is coming, my another room is somewhere here, then again is going to somewhere this direction. When I come into this section, it's going that way. Okay, so this is your basic sketch मैं बोलूं. So suppose this is my basic rough layout sketch for that, and उसके बाद when you decide how you going to be execute that, and जो भी आपका size होगा, size of your walls and everything, 2 meter by 2 meter and everything like that. ठीक है, अभी तक आपको ये क्लियर है? So once we started this and to block out one and the initial staging, this is we call all gray boxing. ये multiple level में भी हो सकता था. We can add height into this one, like another layer into this one. It can go maybe somewhere in this section when we go into inside of this one area. So maybe from this corridor, when we go in this section, maybe the another room somewhere there, or maybe it's going down the stairs, or maybe it's going upstairs. So you can add all those. It's totally up to you and depend on the concept how you want to add it. So you have maybe a staircase or maybe block out ramp and anything you want to add all those things that will generally add into your like if you need a stair that is going down below here, maybe I just don't want this section. I'll open it. Okay, so let me come back here. Okay, so this is all are the blockout meshes that is not going to be generally used with anyone, and आप ये पूरा mesh अपनी team को share करोगे to do the blockout and everything, so that can be done initially. Okay, so let me snap it here. And you will decide key what the length of this blockout stairs and anything, kitne numbers of stairs you needed, what the width of this stairs. It's totally up to you how you want to do that. Okay, let's see the depth. I just want to increase the depth a little bit. Okay. Okay, and then after that you will decide another room somewhere there, maybe the down the line.
So okay, so this is another section. Just as a rough idea मैं आपको दे रहा हूँ. So you can do that. How that has to be. Okay, how this floor area and everything, the another part from somewhere here. So then we'll decide key how that has to be. This is just as a rough initial what you call as a blockout. Still at this ideation phase, अभी तक ऐसा कुछ finalize नहीं है कि this has to be the final version, or maybe we have to change that one. So this is totally uh, in the ideation stage when we're doing all those things, and you will play test it. Bina play test ke you cannot go forward toward this one. So please make sure when you're doing it, it has to be play tested. Okay, so this is the other section that is, और कितना deep जाना है, it's totally up to you and how you want to build all those. Okay, so I'll close this section here, or maybe another room. It's lead to you maybe another section here somewhere. Okay, so now we can take this one and this one. We go another corridor. Okay, so let me here. Okay, and let me close this out. I just feel like that's fine. The another section here somewhere the player has to come down. Let's see how this is look like. There you go. Okay, so now you can see the other room, the player will come down. If you whatever the staircase and stair का detail, if you need a more depth and anything, you can do that. ठीक है, या फिर you want a obstacle कि नहीं ऐसे नहीं इधर से घूम के जाना है, or maybe you can add obstacle into this. There are so many things you can do. Suppose if I do this somewhere here, so this is my suppose has obstacle, or maybe ये कुछ भी हो सकता है. This could be your oil drum, या कोई roof टूट गया है या anything like that. So when you place this as a blockout area, so you can feel another dimension to it, and it will be more dynamic when you play and see that how that has to be. Okay, so that player has to go turn around and go that particular section, or maybe in this area showing the light and everything. But what we can do in this area, we can block out this section, and that can be done anyway. So generally अगर आप गेम खेलते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, there's so many things are there, right? So that can be done. And this boxes and everything that block out, generally it could be anything कि tree हो सकता है, building के roof fall कर सकते हैं, it could be anything. Okay, it's not about कि क्या है and all. So it's totally depend how you place all those things. And why? Because player cannot go अगर मान लो कि if you want has some other tunnel and everything. So it totally depend आपके कॉन्सेप्ट में एंड एवरीथिंग क्या कर रहे हो, एंड वो कैसा दिखता है, आपका विजुअलाइजेशन कैसा है,
and just check with the playtesting कि वो सही है कि नहीं, and these area can be replaced with any obstacles, maybe furniture, sofa, anything like that. अगर लास्ट ऑफ अस खेला है आप लोगों ने, so there's this kind of thing, काफी सारी चीजें थी, so you can see कि वो दिखता कैसा and everything. तो कितना टाइम लगा मेरे को ये करने में? हार्डली an hour, or maybe if generally if I'm not explaining, it's hardly a half hour. आप टाइमर लगा के कर सकते हो. This is generally a good test for you to do this kind of practice, and certainly as a good level designer, when you're doing all those things, you understand कि कैसे करना है, और जितना बार आप करोगे मल्टीपल टाइम, यू विल सी कि वो दिखता कैसा है एंड हाउ दोज थिंग विल बी, एंड उतना आपको आइडिया मिलेगा कि ओके नहीं, नेक्स्ट प्लेटेस्ट के लिए वी कैन ऐसा कुछ बना सकते हैं. या फिर कोई गेम आपने खेला होगा, बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू प्लेड सम गेम एंड देन यू लाइक सम लेवल्स, एंड बट अंडरस्टैंड कि आपको वो लेवल अच्छा क्यों लगता है, सबसे पहली बात, व्हाई यू लाइक दैट लेवल एंड एवरीथिंग. ठीक है, एंड उसमें अच्छा क्या है, एंड टू डू सेम थिंग व्हेन यू डू योर इन योर लेवल डिजाइन. ठीक है, अगर मान लो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो या हॉलो खेल रहे हो, सो इट डजेंट मैटर कि जिस तरह से हर एक लेवल बना है कि इसको मैं जिस तरह से बना रहा हूँ, अदर लेवल ऑल्सो विल बी डन दिस वे, ऐसा लाइक ओपन वर्ल्ड के लिए है, या फिर if I'm doing any kind of environment, mountain area, so that is some other process to do it. Okay, so but initial thing has to be the same thing. The blockout will be the always will be the same, कि blockout किस तरह से कर रहे हो and everything, so the blockout will always will be the same. That is not going to be changed, so please understand this one. Okay, and now I can go back to my starting somewhere here. I'll show you how to use that modular kit and everything. Okay, यहाँ तक क्लियर आपको? सर आपने गेम बनाया है, Ritik Kumar. Yes, Ritik, I have worked on that game. And if you work on Froza Horizon and Tekken and all, so I worked on those games, and SmackDown, Pain and all, WWE. So okay, so now we can use just a key floor. So now this is my floor. Okay, so this is the one set of the floor. So I can place it somewhere here, and as I using this, so I'll just show one so you can understand कि how that has to be look like, and उसके बाद आप लोग कैसे करोगे, and then how we'll start adding our details and everything into this. So let me lower down my snapping, so around somewhere here, and I'll okay. So there's a some trick to this. अभी generally when I'm adding this is this floor is very क्या बोलता हूँ, बहुत, it's not that much detail into it. Okay, so अगर और ज़्यादा मुझे डिटेल अगर देखना है, so you can see there's a so many details on this floor. काफ़ी सारी चीज़ें, वो धीरे धीरे आएगा. It's not about कि we can initially we can do that. So suppose that is a manual process. ऐसा नहीं कि कोई मैंने plugin पे click किया और वो हो गया. And if your other studio has their own set of tools and everything to faster all those things, ठीक है. If I can go this as a modular section, so let me uncheck this. Okay, and where's the floor? Here's the floor add-ons. We have all this. So if I can add into this, so you can see the small tiles and all. So let me. So these are like generally as like tiles. Generally, you will add into your floor section. So I'll show one, and इसके बाद जो होगा, you can add those kind of detail into your all what you call this detail models and everything. It's not about कि everything you have to model it. So this is the thing generally will do. Okay, so let me do it this way. So okay, this is a different version of this kind of thing. Okay, so one,
So we don't need this one. I'll just use this three and then I'll show you how to do that. So generally मैं क्या कर रहा हूँ? I'm just adding it manually where I need that details to be. Okay, to give this as like a floor broken and anything like that. Okay, so now we have this three. What we'll do, we can copy it multiple time or place it where you want. So this way you can add a tiling detail. आप ये पूरा एक बना के sculpt करके रख सकते थे. That is generally the other way to do it and everything. Okay, so once you're done, I'll select everything with my floor and all. Okay, you can see everything is selected. And from here, I can make this as a one single element, right? So if I can right click into this and say as a level instance, okay? I'm not adding a multiple object into this. उसको मैं combine करके एक बना रहा हूँ and then इसको मैं multiple time use कर सकता हूँ. I can decorate this the whole uh, floor as a multiple tiles and then I can convert into this as a label instance. Label instance generally करता क्या है? It's create as a instance of that and then उस instance को मैं multiple time use कर सकता हूँ but game engine उसको एक ही calculate करेगा. So that is the beauty of this as a label instance. ठीक है? So let's keep it Z and then I'll okay it. Then I'll save this into as my where my map is, or you can type as a create as a folder that instance, and I'll save it here. This is flow type. So please make sure आप अगर जितना भी detail बना रहे हो and you can save all those, right? And now save this as a flow weekly. Now you can say this. Now have a one single mesh, combine everything. I can use the same instance again and again. Okay, and then generally engine will calculate this as one. आप अगर 1000 use कर रहे हो 100 use कर रहे हो, that is not going to uh, overload and into your scene and not going to increase your memory or anything. It will be calculated as a one. Okay, so now I can rotate this guy as a 180 and I can place it somewhere where I want. Okay, so this kind of thing generally when people will make इस तरह से बनाते हैं and then create a detail and then add all those things. So this is the one like a floor का बताया, right? Same thing I can do for the wall. So if I can go into this, okay, so this is wall section. Now have a initially मैंने आपको दिखाया था 4 different kind of wall there. You can say this is my wall, and if you have that measurement correct and everything, and you just snap it and place it somewhere, okay, and just see where the floor is, and then I can place exactly in my model. Okay, so don't worry about the roof, we can manage it. So this is my wall section. Okay, and what else we can add into this? And we can add a window, and if you see in my concept, the wall section here, there's a window somewhere here, and then between has a pillar. Okay, and let me, if you have a window section, so I have it like a 3, so double section 2, and ये modular आप खुद ही बना सकते हो. You can do all those things separately. It's totally up to you how you want to do it. Okay, so now I can go with this as a pillar section, which kind of pillar you want to use it. So let's see what kind of depth you want. So initially, quickly I can done this. So now I can add a variation to this. Sometime I'll add a single window, sometime I'll add a multiple window into this. So Rajesh Kumar, let me read your chat. काफी सारे chat आप लोग डाले, काफी interested हो सब लोग. And I can see so many interesting faces are there. Answer me. Pick my question. Okay, Rajesh. What's your question? Your game industry name. Game industry काफी बड़ी है. That's which game industry you want to know?
गेम इंडस्ट्री नेम नहीं था, गेम के स्टूडियो होते हैं। देख लो सर, इंडस्ट्री नेम, योर इंडस्ट्री नेम। योर इंडस्ट्री नेम। I'm teaching you 3D, thus I'm from 3D gaming industry. So industry, it's same. You are asking me ki you are living in India, are you Indian or not? So just ask a specific industry. काफी सारी है, VFX, 3D and everything. So if you are asking about the industry, so I belong to 3D. So that's the thing. Again, if you are asking about the studio, so right now I'm just working with physics wala and then use and also School of Design with physics wala. Okay, so same thing. I'm just using this same modular set, minimum sets are right. I'm just replacing where I want all those things, right? So you can see, and quickly I can iterate this the whole uh, environment, and that will look real, right? So you can understand this. Now my floor is ready, my wall is ready. I only have to do all those things a little bit detailing. Game studio. Right now I'm working with physics wala, and they have like a 3D department all. So my game, not any gaming studio right now. Okay, so now this corridor has a door, and then we have to do this kind of things like a door section and anything like that. Or maybe we have to move this section a little bit down the line below. It's fine, we can do that. Okay, so understand this. Yes, समझ में आया. अगर मैं यहाँ से ये blockout हटा दूँ, so let me first. Now we have a wall, right? So we have this as a window here, so we can use this section as a window, and we can place a window somewhere here. Okay, so it's totally up to you. किस तरह से हम कर रहे हैं? So suppose if I can go to this window, and now we have a window section. Let's see with this my window two. Anything is there? You say me, you share portfolio. Okay, then to my side. Definitely up portfolio share करो, then we'll look into this. Okay, so let's see the door window. Now we have this one, double door, so we can use this section somewhere here. Okay, and if everything is correct, this will fit. Just understand आइडिया जो हमने ब्लॉकआउट किया था, and the initial जो ब्लॉकआउट था और जो हमारा, it's almost similar. It's not that much difference in that. Generally, you have to place where you want all those things. Okay, and how that will be look like. And this is the beauty of your gray boxing when you're doing this kind of thing. अब जब gray boxing करते हो, so this will generally add into that, and it will add extra level of detail, and उसको iterate करना, it's very easy. Okay, let me save this one. Gray boxing, it's okay, so done. And there's something fine. So let me read your fine. You say me that. Okay, यहाँ तक समझ में आ रहा है? This is generally we can do all those things like we can go on, and then we can add detail and everything. Floor detail, if you can see in this area, the rooftop is also has a detail, all those kind of thing. Let me find any roof ceiling in this. अगर है तो I can show little bit of that. So आप add कर सकते हो अपने उसमें and everything. So if you have a ceiling, so this is ceiling section, so we can add in the roof section, right? So let's add this one. Let's move somewhere with my camera somewhere here.
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको अच्छा लगता है करने में, यू कैन डू एनीथिंग विद दिस। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज माई सीलिंग एरिया वेयर द सीलिंग हैज टू बी। ओके, एंड बाद में आप इसको आके ट्रेट कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डू दैट। Okay, so almost the measurement is correct, but it's little bit up. It's fine, chalega. Okay, now I can copy my ceiling where I want that to be. And this way we can add. I'll show some trick to add a light to your scene. Okay, first I'll block out everything because my light is leaking with this geometry message. Now you can see that when I start doing all those things and my light is fine. So I'll show some trick how can initially you can guide as a light as an initial part, so where you can see your character and all will be guided. Okay, so I'll just drop this guy a little bit down so I can see somewhere. Okay, let me just a second save my scene, and I'll go to this project setting, and where we call exposure. I'll keep it manual. No, it's fine. Most of the time when we go outside and inside, my light is changing and everything, so I don't want that. And now I can increase my light intensity. 15. See, we if you have any post process volume. अगर किसी को नहीं पता what I'm just adjusting my light so I can see how I can do this initial when I start with the lighting and all. So I did the lighting exposure manual so I can control the exposure. I don't want a game engine to control it. Okay, so I just add a lighting with myself. So this is my uh, post process volume. Generally it will control the light and everything. Okay, so I'll keep it. Okay, so let me go and check with this exposure. Now I can see my lighting is fine. Now I'll keep it around. So now if I can go out and in, my light is not going to change. It always will be consistent. But initially what is happening, generally when I go to this brighter area, your eye will adapt, and when you come inside and automatically it will be down the lighting. So this is generally happen in real world also. So that's why we can have to change it. Now we can hide this part where my window will be and how the light will come out. Okay, and I don't want my outside light to be contributed into this. So agar aapko chahiye, I'll show some trick to add a window light into this and adding a light into the floor. Clear है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि how we block out first the whole blockout label, and then initially once your blockout is done you can send this blockout meshes and everything, and they know कि okay my wall size ये है, and then your modeling team will be work on this wall size. So this is the one wall they worked on this, and then if you think no I don't want this to be texture anytime, you can come and change. This is totally up to you. So I just want my texture has to be something different or anything like that. I can do some different texture. Same wall, different texture. So that way you can add a variation to your model when you're working this kind of thing. Okay, so I can use different texture to different person. If I don't like that, what do you call that? I'm just changing the material so I can see where it is and how this is looking. So I like this way. Okay,
and I don't want any lighting on my outside area. So initially when you do that, I'll keep it only this maybe directional light, and other things I don't want it. Okay. So I don't want this volumetric cloud or anything like that. I just delete everything, and I don't need a sunlight also. Okay. So again, you will ask, sir, आपने तो सारा light delete कर दिया, तो what will do all those things? Okay. So let's see here, and this is my window. Now I want to art direct the light where player should see and उनको क्या देखना है और कहाँ जाना है. Okay, so you can work on your lighting, and you can do those if you have a light model and everything. Maybe I have, I'm not sure about this. So let me go back to this assets, and mm, light fixers. So these are the lights, we can use it, or maybe we can create our own lights. So suppose if you using with this one, okay, and we can create the data. I'll show one trick to you, and we can do all this thing. So initially, what I do, uh, because environment doesn't have any light, if I can go back, you can see it doesn't have any light here. So what we'll do in this, and I'll create a shape. Okay, this is a cube. And roughly around your window size. And Unreal has a good feature to do all those things like emissive and all. So I'll convert this one into as emissive. Okay. Okay. So if you have a emissive, if you don't know how to create that emissive material and all, do that. So we can go to this as a material and material instance. Let's say emissive if you already is there. If you don't know, quickly I'll just show you how to do it. So let me, not that one, let it compile. Okay, let me read. You tell me, you show us again. You tell me, show us again. Okay, and create this and light, and then we'll use this one as a light one. Okay, let's see one unlit. Okay, so this will generally initially I'll take it as a color. Okay, so this way I can create this material as a light instance. Initially I'll keep it maybe 500. That's fine. Save it. And okay, and I'll create this as an instance. So this is my light, and this is my object. And now I can go to this and apply this one. And once I go to this as a lit mode, now you can see it's generally giving the light to the whole scene and everything. Okay, now I can control this, your light color and your light intensity, how your light has to be in this area. Okay, so that way you can control the light coming through as a window, but generally we don't have any light outside. Okay,
So, or maybe you want to control the color of that. So definitely you can do that. Okay. So let's see, convert this as a parameter, and this is my color. And if I can save this and reopen that, now you can see I have a color option here, so I can control the color, what kind of color I want to use according to, but generally there's no light into this. Okay. Now if I can play, and let me see. Okay, because environment also I off it, so this is generally not going to see it. And this way you can add to your light, and you can add a physical light also, and art directed key where I want that players to be see what kind of light are there, where they have to go. It totally depend on your concept, what kind of scene you are creating it, and how you're creating that one. And if you have any physical model of that light, also art direct with that, and उसको भी आप डाल सकते हो, and उसके through भी आप show कर सकते हो कि what kind of scene you are creating it, and player क्या देखेगा, and then how they want to see with this anything. So you can do it anywhere. Like generally, it's not about कि just एक पार्ट में बता रहा हूँ, you can just apply with this. अगर आप देखोगे तो have this physical light and tube light also, आप उनको डाल सकते हो. You can add a light also into that. ठीक है. So you can, this way you can do any reference. अगर इस तरह का भी scene बना रहे हो, suppose if you're working on this using the physical light also, this is the same thing what I showed here. Okay, and that is generally creating very soft lighting in your scene. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, let me go back, and if I show you the final version of this कि वो दिखता कैसे and everything, and if I can go to this here, Greyboxing, and this section here already, let me save this one. Okay, so, this is the whole details done and everything. If you see this window and all, so this is all like a final version of this. If you want, you can go and see this model also is there in the fab. आप लोग खुद भी लेके यूज कर सकते हैं, and you can create your own label. आपको जैसे बनाना है, what your concept in it and everything. This is exactly the same thing what I used in my label, and to block out this area and everything. If you can see, there's a another room is somewhere here and another section is somewhere here, right? जिस तरह से आपको create करना है कर सकते हो, और ये छोटे छोटे detail you can add. Those are like a, you can add into this model, but modular everything is there, like these pipes and everything is all modular, right? And once you see this as a with the lighting and everything, so you can see the direct the light where those are, the light has to be and all, and these all are the same thing what I showed now. Okay, so अब देखोगे तो this is the same concept and everything. So once you do that, you can see how your scene will be look like once you've done your final proper lighting and all. Okay, so you can work on this. Okay, and you can play and test with this your level, how this is look like, and jitna detail आपको add करना है, it's totally up to you and up to your concept and everything कि कैसा दिखता है and how you want to add all those into your scene, and small detail, and it should look believable. अगर आप कोई भी reference use कर रहे हो कि वो this kind of thing, and ठीक है, so you can add multiple resources, and from whatever like a fab market use कर रहे हो, या फिर if you're using a mega scan assets all free, up जाओ and you can work on this. And before going to close everything in this, if you guys any question or anything like that, please let me know. But उससे पहले मैं कुछ कवर करना चाहता हूँ जो हमने लास्ट टाइम किया था, and there's a something I want to tell you about. Okay,
This is all like a playtesting. Once you create a label and everything, playtest it, see it, iterate it, कि वो कैसा दिखता है and everything. Once you're done with that, and there's a 10 question yesterday we told about. मैंने आपको बोला था. And we are talking about the 10 question की जब भी आप कोई भी लेबल बनाते हो, when you doing start with the game design and everything, ask this 10 question with yourself or maybe with your team key what actually makes a game. The first one is generally what the difference, just the last time we मैंने बोला था what the difference between your movie and the game कि what why we are making this game, okay, and who actually build a triple A games बना रहे हो and किसके लिए बना रहे हो, दस understand your audience, या AR VR के लिए बना रहे हो या education purpose के लिए बना रहे हो या फिर learning purpose के लिए बना रहे हो या फिर just for as a fun, what does the game begin, ठीक है. Just understand this question. अगर नहीं है तो you can take this as a screenshot and ask with your team what does an art come first and what does each department actually do. You should understand this. और मैंने as a job, let me go back to here. There's a section I have written something. Okay, so these are like बहुत सारे ऐसा like जॉब रोल्स है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इंडस्ट्री में. So UI यूजर इंटरफेस दिस आल्सो वर्क इन गेम. काफी जगह जगह में है. इट्स नॉट अबाउट द गेम. डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट दैट आल्सो इज देयर, राइट. सीनियर मैनेजिंग प्रोडक्ट डिजाइनर, जब आप कुछ भी बना दिस ऑल आर द हायरार्कीज आर देयर जो कि आप इनके लिए भी जा सकते हो. दिस ऑल आर लाइक जॉब रोल्स आर देयर. सो अंडरस्टैंड कि डिपार्टमेंट का काम क्या है एंड कितने सारे डिपार्टमेंट्स है. सो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग के लिए ही कर रहे हो एंड देन यू आर वर्किंग ऑन दैट. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर अपार्ट फ्रॉम द गेम. ओके, हाउ डू प्लेयर एक्चुअली एक्सपीरियंस अ गेम. आप जो गेम बना रहे हो एज अ यूजर इंटरफेस या फिर यूजर एक्सपीरियंस क्या है. व्हाट मेक्स अ गेम वर्ल्ड एज अ बिलीवेबल. अगर आप डिपेंड, अगर स्टाइलाइज गेम नहीं है एंड व्हेन यू वर्किंग विद वेरी रियलिस्टिक टाइप ऑफ गेम एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड कि वो एज अ रियल वर्ल्ड से कितना मैच करता है कि नहीं. सो टोटली डिपेंड. ठीक है. अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछो. एंड व्हाट स्किल डज द इंडस्ट्री एक्चुअल हायर फॉर. ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि अगर आप इंडस्ट्री के लिए अप्रोच कर रहे हो तो इंडस्ट्री क्या देखती है आप में एंड व्हाई दे विल हायर यू, राइट. It's not about your portfolio, it's not about your skill set. काफी सारी चीजें I'll explain. Go and just see that. And what should I learn next, ठीक है. लर्निंग सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी बोला कि लर्निंग सॉफ्टवेयर इट्स नॉट दैट बिग डील. ठीक है. सो अंडरस्टैंड योर थिंक प्रोसेस. उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है when you start working with this industry and your thought process to be right. And last note, ये सबके लिए learning software is the beginning and learning how to think like a studio as a your real journey. ठीक है. सॉफ्टवेयर सीखना इट्स वेरी आसान, बहुत आसान है, कहीं भी सीख जाओगे बिकॉज नाउ दीज डेज आर लाइक नॉलेज आर वेरी इजीली अवेलेबल. अब कहीं भी यूट्यूब में जाओ, देयर आर सो मेनी ब्लॉग्स आर देयर. इट्स लाइक ए नॉलेज ओवरडोज. बहुत सारी चीज़ें हैं बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विच वन करेक्ट और नॉट. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एंड सॉफ्टवेयर कहीं भी सीख सकते हो. तो think like as a creator, think like as an artist and as your, so it's totally depend on you. Okay, so I'll close now and then if anything is there, let me know in the chat. So definitely if it's there, I'll connect with you. As you asked, like you will tell me show your game. So definitely will show and maybe please keep touch in this channel and please be update. And definitely we'll update onto this and we'll bring the course for you guys so you can learn all those. And when course start, I will update on this channel or maybe PW skill channel so you can take a note for that. Okay, so thank you everyone, thank you for joining.